good afternoon, students. So we were doing Unit 3, okay? And today is probably the last class of our Unit 3 because next class that is from Saturday. I'll start with Unit 4, okay? So Unit 3 में अभी तक हमने सब कर लिया है, ग्रुप डिस्कशन है, डायलॉग राइटिंग है, मिस कम्युनिकेशन है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, ठीक है? Now we are left with public speech and interview. तो that I'm going to cover today itself, ठीक है? तो पब्लिक स्पीच की बात करते हैं पहले, ठीक है? तो मैं बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगी एंड आई टेल यू हाउ टू गो अबाउट इट, कैसे लिखना है, क्या करना है, ठीक है? और एग्जाम में एप्लीकेशन यू हैव टू डू इट, आपको इसका एप्लीकेशन करना होगा। लाइक तरीका मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है, क्या करना है इसमें, ठीक, कैसे लिखते हैं। और एग्जाम में बेसिकली जैसा कि मैंने आपको पेपर शो किया था कि लास्ट ईयर ओबी में जो है एक पैसेज आया था और उसके बेसिस पे उन्होंने सारे क्वेश्चन पूछ लिए थे, ठीक है? पैसेज से रिलेटेड तो क्वेश्चन थे ही, जिसे रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट हम कहते हैं, ठीक है? उसके अलावा डायलॉग राइटिंग था, इंटरव्यू था, पब्लिक स्पीच था, लेटर राइटिंग था, रिपोर्ट राइटिंग था, सभी कुछ पैसेज से ही रिलेटेड था। पैसेज से ही कोई कैरेक्टर उठा करके पूछ लिया गया था, या जो स्पीच का टॉपिक था वो भी पैसेज से ही कुछ चीज उठा ली गई थी और बोला गया था कि इस टॉपिक पे आप स्पीच लिखो, ठीक है? तो इस बार भी मेंटली प्रिपेयर रहेंगे कि इंग्लिश ए में ऐसा क्वेश्चन पेपर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज इंग्लिश ए का लेवल जो है वो बी और सी से थोड़ा ज्यादा रहता है, ठीक है? तो बिकॉज ऑब्वियसली आप लोग थोड़े ब्राइट स्टूडेंट्स हो, इसीलिए यू हैव ऑप्टेड फॉर इंग्लिश ए, ठीक है? तो इसलिए पेपर भी थोड़ा इस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पब्लिक स्पीच की बात करते हैं। तो पब्लिक स्पीच बेसिकली क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि, है ना, मैं हूँ, आप लोग हो, दिस इज नॉट अ पब्लिक स्पीच, ये नहीं, ठीक है? ये बेसिकली यू नो एक फॉर्मल ओकेजन होता है इसके लिए, और यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं, ठीक है? वो कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं, ठीक है? सो अगर हम डिफाइन करें इसे, if we define it, तो we can say that public speech is a component of public speaking, which is the act of addressing to a group of people on a formal occasion. Ab, as you know that you are going to address to a like proper group of people on a formal occasion, तो you need to do a proper planning. अब obviously बात है, एग्जाम में तो आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि हाँ आपको एक दिन का 2 दिन का टाइम मिल रहा है। हाँ, ये प्रैक्टिकल लेवल पे आपके लिए सही रहेगा, जब आपको एक्चुअल कभी लाइफ में कभी पब्लिक स्पीच देना होगा तो वहां पे आपको अच्छे से प्लानिंग, प्रिपरेशन और एक परफेक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ आइडियाज होगा। लेकिन एग्जाम में आपको थोड़ा सा थोड़ा सा क्विक होना पड़ेगा, बिकॉज आपको ऑन द स्पॉट टॉपिक मिलेगा, ऑन द स्पॉट आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है? तो वहां पर भी नो डाउट आपको प्लानिंग, प्रिपरेशन और परफेक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ आइडियाज दिखाने होंगे, ठीक है? एंड इट कैन बी एक्सरसाइज टू इन्फॉर्म, परसुएड और एंटरटेन दी ऑडियंस। तो टॉपिक डिफरेंट हो सकता है, या तो आप कुछ इन्फॉर्म करना चाह रहे होंगे, ठीक है? या कुछ आप किसी को कोई अपनी बात कन्विंस करने के लिए आप यू आर गिविंग पब्लिक स्पीच, कोई ऐसा पॉइंट है, ऐसा कोई मुद्दा है ना, ऐसा कोई इशू है, ठीक है? या सिंपली ऑडियंस के एंटरटेनमेंट के लिए भी पब्लिक स्पीच होती है। So, in order to make the speech effective, the speaker should keep the following points in mind. तो जैसे कि हमने देखा था डायलॉग राइटिंग में और भी सारी चीजों में हम देखते हैं, कम्युनिकेशन में हमने देखा था कि कैसे चीजों को इफेक्टिव और अच्छा और बेहतर कैसे बनाते हैं। तो इन द सेम वे स्पीच में भी देखते हैं, पब्लिक स्पीच में भी देखते हैं कि आप और बेहतर और इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए स्पीकर को जो है कुछ पॉइंट्स अपने माइंड में रखना है, वो ये पॉइंट्स है। सो रिसर्च द टॉपिक थॉरली, नो डाउट ये चीज आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे बिकॉज यू विल बी गिवन शॉर्ट टाइम, ठीक है? देन नो द ऑडियंस फॉर whom द स्पीच इज मेंट। आपको ऑडियंस पता होनी चाहिए कि आप किसके लिए स्पीच देने जा रहे हो, बिकॉज उसके हिसाब से फिर आप चीजें फॉर्मुलेट करोगे, उसके हिसाब से आप अपने पॉइंट्स रखोगे, सेंटेंसेस फ्रेम करोगे, है ना? अब जैसे अगर हम एग्जाम की, अगर हम यहाँ बात हटा दें, अगर हम प्रैक्टिकल लेवल की बात करें, ठीक है? तो प्रैक्टिकल लेवल पे सपोज अगर आपको कोई स्पीच देनी है तो आपको ऑडियंस का ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप अगर सपोज कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आप जाके साइंस वालों के सामने या आप आर्ट्स वालों के सामने जाकर आप अपने अकाउंट्स के लेसन बताओगे वहां पर। नहीं, आपको जनता के हिसाब से बात करनी होती है, ठीक है? यू हैव टू स्टेप इनटू द शूज ऑफ द ऑडियंस। आपको रिसीवर, आपको ऑडियंस के अकॉर्डिंगली बात करनी होती है। अदरवाइज तभी आप जो भी कम्युनिकेट कर रहे हो उसका ऑब्जेक्टिव रियलाइज हो पाएगा, वो चीज सक्सेसफुल हो पाएगी। वरना जो आप बोल रहे हो जब सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हो तो उसका कोई फिर मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है? Then you need to understand the level
and expectation of the audience. Then you have to keep audience-centered approach. You need to prepare a written draft and you need to rehearse the topic before its delivery. Make sure that the speech is well planned, adequately convincing, properly substantiated and unquestionably relevant to the needs of the audience. क्वालिटीज हैं कुछ गुड स्पीकर की जो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में कभी काम आएगी, और जब आप लिख भी रहे होंगे तो भी आपको स्पीच इस तरह से लिखना है कि एज इफ यू आर स्पीकिंग, इट शुड हैव अ कॉन्वर्सेशनल टोन, ठीक है, ऐसा लगना चाहिए कि आप बोल रहे हो, ठीक है. So she or he speaks in a pleasant, clear, confident and loud voice and uses proper pitch, tone and intonation. Then he or she uses a correct posture, natural gestures and uses appropriate body language during the speech. Then she or he makes direct eye contact with the audience to win their trust and leave immediate impression on them. He or she uses simple words and languages suited to the occasion. तो बहुत bombastic, बहुत ही ornamental language use करने की जरूरत नहीं है, simple words, simple language use करेंगे, ठीक है. Then she or he uses correct pronunciation of the words with voice modulation. अगर आप pronunciation नहीं सही करेंगे, सही नहीं करेंगे तो फिर मीनिंग बदल जाती है. और इन द सेम वे अगर आप लिख रहे हैं तो स्पेलिंग एरर नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है. अच्छे से लिखेंगे सो दैट कोई ऐसा चांस ना रहे कि आपके मार्क्स कट जाएं. Then she or he uses personal examples to establish good rapport with the audience. Then next is he or she creates a verbal imagery to leave desired impact on the audience. Then she or he determines the focus of speech to avoid digression from the topic. ठीक है, तो जिस टॉपिक पे आप स्पीच दे रहे हो तो ध्यान रखना है कि उसी टॉपिक पे आपको स्पीच देना है, आपको टॉपिक से डाइवर्ट होकर नहीं बात करनी है, ठीक है. You should not get diverted from the topic. Then she or he uses wit and humor to keep audience entertained during the speech. So you need to keep, you need to make sure that the audience is, feeling interested during your whole speech, because तो ऐसी कोई भी monotonous, boring सा आपको टर्न नहीं देना है अपने स्पीच पे, ठीक है. देन पार्ट्स हैं कुछ पब्लिक स्पीच की, ठीक है. तो जैसा कि हम देखते हैं लेटर राइटिंग में, ऐसे राइटिंग में, उसी तरह जैसे इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन होता है, तो इन द सेम वे स्पीच में भी इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी होता है और कंक्लूजन होता है, ठीक है. सेम पैटर्न फॉलो होता है, ठीक. इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ पब्लिक स्पीच. ये पहला पार्ट होता है. वो ऑब्वियसली अगर आप जिस टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हो सबसे पहले आप है ना इंट्रोडक्शन दोगे. और इंट्रोडक्शन में ये है कि आप यहाँ पर आप अपने बारे में भी इंट्रोड्यूस करते हो कि आप कौन हो, ठीक है. और फिर आप टॉपिक के बारे में बताते हो कि हाँ ये टॉपिक है हमारी स्पीच, ठीक है. लिखने में भी आप यही करोगे कि पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे, ठीक है. सो द स्पीकर, सो इंट्रोडक्शन इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ पब्लिक स्पीच. द स्पीकर introduces herself or himself to the audience as well as pronounces the topic of speech. He or she presents background of the topic in the beginning. He or she can start the speech with some provocative quote, interesting anecdote and joke by asking some question or stating purpose of the speech. तो आप किस तरह से start कर सकते हो speech कि आप कोई interesting सा quote बोल सकते हो, कोई story interesting से बता सकते हो, या joke है ना, या कोई ऐसा क्वेश्चन हो, है ना. तो इससे क्या होता है कि आपकी स्पीच थोड़ी इफेक्टिव रहती है और फिर लोगों को और इंटरेस्ट आता है सुनने में आगे. अगर आप बहुत ही बोरिंग चीज से स्टार्ट करोगे तो नोबडी इज गोइंग टू लिसन टू यू और नोबडी इज गोइंग टू रीड योर पॉइंट, ठीक है. तो इट इज बेटर कि आप थोड़ा सा इंट्रो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएंगे ताकि जो भी रीडर है या जो भी ऑडियंस है ना, वो सुने अच्छे से, आपकी बात पढ़े और सुने. नेक्स्ट पार्ट है पब्लिक स्पीच का बॉडी. ये सेकंड पार्ट होता है स्पीच का और इसमें सारे इंफॉर्मेशन और आइडिया होते हैं, लॉजिकल सीक्वेंस में आप अरेंज करके लिखते हो, ठीक है. द स्पीकर प्रेजेंट्स इजीली एक्सेप्टेबल आइडियाज इन द बिगिनिंग टू पुट द ऑडियंस इन अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड एंड देन प्रेजेंट्स लेस एक्सेप्टेबल आइडियाज so that the audience can agree with the points without much effort of him or her. सबसे पहले तो आपको सबसे जो मोस्ट एक्सेप्टेबल आइडियाज हैं आपको वो प्रेजेंट करने होते हैं बिगिनिंग में,
ताकि ऑडियंस को जो है पॉजिटिविटी मिले, ठीक है, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रहे उनका। फिर आगे जाके आपको लेस एक्सेप्टेबल आइडियाज बताने ताकि जो ऑडियंस है वो अग्री करें आपकी बात को और आपको ज्यादा एफर्ट ना लेना पड़े, ठीक है। फिर आता है कंक्लूजन। तो ये भाई फाइनल पार्ट है आपकी स्पीच का। इसमें बेसिकली स्पीकर क्या करता है कि वो समराइज कर देता है मेन पॉइंट्स इस पार्ट में, ठीक है। और मतलब that is the speaker ends the speech on a climatic note and avoids abrupt ending of the speech। तो जैसे कि हम ऐसे वगैरह में दिखते हैं, आप लिखते ही आए हैं अभी तक, तो उसमें अचानक से एंडिंग नहीं देना होता है, आपको एक प्रॉपर एंडिंग देना होता है। लग रहा हो कि हाँ प्रॉपर एंडिंग, ऐसे नहीं अचानक से आधी दूरी बात बोलकर गायब हो गए, ऐसा नहीं करना होता है, ठीक है। कि स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रेपरेशन, कि कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है, जो इन्वॉल्व हैं आपके प्रेपरेशन में पब्लिक स्पीच के, ठीक है। तो सबसे पहले एक डिलीवरी ऑफ देखते हैं कि कोई भी चीज होती है। अब जैसे अगर आप एक सिंपल सा एग्जांपल ले लें कि अगर आपको कुछ बनाना है, यू हैव टू कुक समथिंग, तो उसके पीछे भी एक स्टेप कुछ इन्वॉल्व होते हैं। कि अगर आपको सिंपल से अगर एक ऑमलेट भी बनाना है तो भाई उसके लिए भी देयर आर सर्टेन स्टेप्स दैट आर फॉलोड, ठीक है। तो ठीक इसी तरह ये तो फिर पब्लिक स्पीच है भाई, ठीक है। तो इवन अगर सिंपल से अगर आप ल्यूकवार्म वाटर की बात करें, अगर आप हॉट वाटर की बात करें, तो उसके लिए भी एक स्टेप होते हैं कि भाई उठाओ, पानी डालो, गर्म करो, है ना। ठीक इसी तरह इसकी भी प्रेपरेशन में कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। बिकॉज पब्लिक स्पीच जो है कुछ लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट टास्क भी होता है। इनफैक्ट कुछ लोग डरते भी हैं, है ना। लेकिन ये कैसे ठीक हो सकता है? ये ठीक हो सकता है प्रॉपर गाइडेंस से और प्रैक्टिस से। जैसे कि अगर आपने स्पीच लिखा भी है, सपोज अगर आप उसे प्रैक्टिस करोगे, जैसे अगर आपको रियल लाइफ में कभी देना है तो मिरर को देख के प्रैक्टिस करो, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा गेन होगा, ठीक है। और इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, वो स्टेप्स हम देखते हैं। तो 3 स्टेप्स हैं: प्लानिंग, राइटिंग एंड डिलीवरी। प्लानिंग, राइटिंग एंड डिलीवरी, ठीक है। तो प्लानिंग सबसे पहले एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है डिलीवरी के लिए पब्लिक स्पीच की, ठीक है। और इट हेल्प्स एंड इट फैसिलिटेट्स द स्पीकर टू प्रिपेयर एंड डिलीवर द स्पीच इन एन इफेक्टिव मैनर, ठीक है। और ये पहली स्टेज है, प्रिलिमिनरी स्टेज है। इसमें स्पीकर जो है वो कंटेंट प्लान करता है, अपना मेथड प्लान करता है, ठीक है। और इसमें वो ये भी ध्यान में रखता है कि भाई ऑडियंस क्या है और ओकेजन क्या है, ठीक है। तो बेसिकली जो भी आप प्लानिंग करते हो, मटेरियल इधर उधर से उठा रहे हो, है ना, या आप प्लान कर रहे हो कैसे लिखें क्या है, तो वो ये स्टेज है, ठीक है। फिर राइटिंग है, ये आपका नेक्स्ट स्टेज है, ठीक है। ये प्लानिंग के बाद आता है। अब ऑब्वियसली जब आपने प्लान कर लिया है तो आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू राइट। तो इसमें द स्पीकर कलेक्ट्स द रिक्वायर्ड मटेरियल, क्रिएट्स एन आउटलाइन, प्रिपेयर्स द फर्स्ट ड्राफ्ट एंड एडिट्स द ड्राफ्ट। इसमें जो है स्पीकर फाइनली मटेरियल कलेक्ट कर चुका है, तो अब एक आउटलाइन प्रिपेयर करेगा, फर्स्ट ड्राफ्ट प्रिपेयर करेगा, और इसमें अगर कोई एडिटिंग रिक्वायर होगी तो वो करेगा एडिटिंग। फिर डिलीवरी, ये फाइनल स्टेज है आपका। इसमें आप ऑडियंस के सामने अपेयर होते हो, डिलीवर करते हो अपनी स्पीच, ठीक है। ये तो बेसिकली प्रैक्टिकल उसके लिए है। पर हाँ, अगर आप रिटन की बात करें, एग्जाम की बात करें, रिटन में पब्लिक स्पीच की बात करें, तो वहां पे आप अपना फाइनल ड्राफ्ट, आफ्टर एडिटिंग आप अपना फाइनल ड्राफ्ट आप लिखते हो, ठीक है। और बोलने की अगर बात करें पब्लिक स्पीच में, तो फ्लुएंसी वहां पे एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन हाँ, रिटन में ये चीज नहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज यू आर सिंपली राइटिंग इट। तो ध्यान रखेंगे, ज्यादा कट्टम कट्टा नहीं करेंगे, सीधा सीधा लिखेंगे, ठीक। वाइटनर भी नहीं लगाएंगे, आराम से लिखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। 3 घंटे का पूरा टाइम मिलता है ओबी में आपको, ठीक है। कुछ स्ट्रेटजीज भी हैं इफेक्टिव डिलीवरी के लिए। So some persons have a common fear of public speaking, which is called stage fright or ग्लॉसोफोबिया। तो कुछ लोग को डर लगता है पब्लिक स्पीकिंग करने से, तो उसे बोलते हैं स्टेज फ्राइट या ग्लॉसोफोबिया। सो दे गेट नर्वस व्हेन आस्क्ड टू से समथिंग बिफोर एन ऑडियंस। सो इसमें बेसिकली यही है कि आप गाइडेंस और प्रैक्टिस से आप ठीक कर सकते हैं, अपने इस फियर को ओवरकम कर सकते हैं। और इसमें यही है कि जितना प्रैक्टिस करोगे अच्छा है। मिरर के सामने बोलो। मिरर के सामने बोलने से क्या है कि आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, पोस्चर्स, आप सब चीजें देख पाओगे कि एग्जैक्टली आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, कैसे बोल रहे हो, है ना। तो उससे काफी हेल्प मिलती है एंड इट हेल्प्स यू टू गेन कॉन्फिडेंस। तो देखते हैं एक एग्जाम्पल थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो स्पीच का जो है आप टॉपिक लिखते हो ऊपर कि क्या टाइटल है स्पीच का, वो आप लिखते हो, ठीक है। तो फेयरवेल स्पीच एट द टाइम ऑफ लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, मगर आप लिखोगे, देखेंगे क्या है, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, और हाँ, वर्ड लिमिट का ध्यान रखेंगे। जितनी वर्ड लिमिट
एग्जाम में आई है उतनी ही लिमिट लिखनी है। अगर 500 से 800 है वर्ड्स पूछे गए तो उतने में ही, उसी रेंज में आपको लिखना है, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम स्पीचलेस टुडे. It is time to depart, but I am not able to control my emotions, as I will have to say goodbye to all my seniors, colleagues, and friends present here. No doubt, it has been an amazing experience to be a part of Galaxy International for 5 years. All these years, I enjoy the work assigned to me simply because of conducive environment. I am thankful to the company for giving me the opportunity to work on the projects of my interest. I am also obliged to the management for their guidance and motivation. Whenever I had to face any difficulty, my managers helped me to come out of the situation. Next, my colleagues, I can never forget you for your affection, sense of bonding and belongingness. Really, all these years we worked like a family. I thank all of you for your kind support. All of you will remain in my heart forever. I may say sorry if intentionally or unintentionally I spoke some bitter word to someone. I feel she or he may excuse me. Thank you one and all for making my stay such a delightful experience. Thanks for such a wonderful farewell party as well. Thank you. अब यहाँ पे एक चीज थोड़ा कमी है यहाँ पे, वो ये कि इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया, तो यहाँ पे आपको अपना नाम भी बताना पड़ता है कि मैं इंट्रोडक्शन नहीं देना पड़ता है कि आई एम सो एंड सो, ठीक है। एक और देखते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। ये है स्पीच एट द एंड ऑफ अ कॉन्फ्रेंस, ठीक है। सो यहाँ पर भी नाम नहीं है, अब अपना सबसे पहले नाम इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को सबसे पहले, ठीक है, कि आई एम सो एंड सो, ठीक है, एंड आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस सो लाइक समथिंग लाइक दैट, ठीक। उसके बाद स्टार्ट करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव रीच्ड एट फाइनल फेज ऑफ द कॉन्फ्रेंस. It would be an understatement to say that the conference has been immensely successful. It had been possible because of your kind support. It is primarily my duty to express my sincere gratitude to the persons who contributed, directly or indirectly, to make this event a huge success. There are quite a few people who have generously contributed to its success. First, erudite resource persons, Professor K.N. Tripathi and Professor D.C. Arora, for their enlightening talks. We are really thankful to all the participants who came all the way from different parts of the country to attend the conference and whose participation made it successful. We are also grateful to our technical personnel, Mr. Naresh, who made sure that there are no technical glitches during the conference. Thanks to Mr. Rakesh, who provided us good food. We are also thankful to our support staff who worked day and night to make this event possible and successful. And above all, we thank our audience for patient listening. Thank you one and all. Thank you. So this is how you write your speech, ठीक है। वर्ड लिमिट का ध्यान रखेंगे, ठीक है, वर्ड लिमिट का ध्यान रखेंगे, जितनी लिमिट पूछी गई है उतना ही बताएंगे, ठीक है। So this was your public speech. Now I'll deal with the last component of your unit 3, which is interview, ठीक है। तो वो मैं शेयर करती हूँ थोड़ा। इंटरव्यू, यस, इंटरव्यू, ठीक है। तो देखिए, मैंने डायलॉग राइटिंग बहुत ही डिटेल में आपको बताया था, ठीक है। इंटरव्यू में भी बेसिकली वही करते हैं, डायलॉग राइटिंग जैसा ही होता है, बस सिचुएशन थोड़ी यहाँ पे कभी कभी फॉर्मल ज्यादा होती है, फॉर्मल ज्यादा होती है। डायलॉग तो चलो दो फ्रेंड्स के बीच में डायलॉग हो गया, है ना। यहाँ पे कुछ कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो होता है इंटरव्यू में, ठीक है। और दूसरी बात की, जैसे कभी आपके सामने डायलॉग में हमने क्या देखा था कि कम से कम 2 लोग बात कर रहे हैं, है ना, ऐसा था 2-3 लोग बात कर रहे हैं। लेकिन इंटरव्यू में अगर प्रॉपर एक जॉब इंटरव्यू जैसा कुछ आ जाता है, सपोज, है ना, फॉर एग्जाम्पल आ ही जाए, यू नेवर नो, तो वहां पे आपको एक कैंडिडेट और बाकी पैनल के 5 लोग बनाने पड़ते हैं, ठीक है। और कैंडिडेट का नाम आप लिख सकते हो, बाकी पैनल में अगर 5 लोग हैं तो ABCDE करके लिखेंगे आप, ठीक है। जिसमें से एक बंदा जो है वो चुप रहता है, बोलता नहीं, वो साइकोलॉजिस्ट होता है, वो सिर्फ देखता है कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है।
बाकी रूल्स है जो भी ग्राइसिस प्रिंसिपल था, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, वो सब इंटरव्यू में भी फॉलो होगा, क्योंकि इंटरव्यू में भी बेसिकली क्या हो रहा है भाई, डायलॉग्स ही तो एक्सचेंज हो रहे हैं, कॉन्वर्जेशन ही तो हो रहा है, बस हाँ थोड़ा सा यहाँ पे सेंसिबल डायलॉग्स होंगे, थोड़े से फॉर्मल डायलॉग्स होंगे, ठीक है। सो अगर हम टर्म की बात करें इंटरव्यू के, the term interview means to view each other, ठीक है। It is activity in which questions are asked and answered. इसमें बेसिकली क्या होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आंसर दिए जाते हैं। मिनिमम 2 persons are involved in the process. 2 लोग मिनिमम, कम से कम 2 लोग का होना जरूरी होता है इंटरव्यू में। One of them asks the question and the other answers them. एक क्वेश्चन पूछता है और अगला आंसर देता है। तो जो क्वेश्चन पूछता है, the person who asks the question is called interviewer. और जो आंसर देता है, that is the person who answers the question, is called interviewee. So the interviewer asks questions to elicit facts or statements from the interviewee. Interview is based on oral inquiry and oral response. Basically oral inquiry और oral response होता है। और एक चीज मैं और बता दूं इंटरव्यू में आपको, कि अभी चलो ये तो आपका लिखने में आएगा आपके एग्जाम में, लेकिन अगर हम रियल लाइफ के बारे में बात करें, भाई सभी को कोई ना कोई इंटरव्यू तो जरूर सब फेस करेंगे लाइफ में, गॉड विलिंग, ठीक है। तो वहां पे आपको अपने वर्बल कम्युनिकेशन के साथ साथ ओरल जो आप बोल रहे हो उसके साथ साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का भी ध्यान रखेंगे। अपनी जेस्चर, पोस्चर, आप कैसे बैठ रहे हो, कैसे उठ रहे हो, आपका फिजिकल अपीयरेंस क्या है, आई मूवमेंट क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, हर चीज का ध्यान रखना, क्योंकि वहां पे ना वो आपकी नॉलेज तो टेस्ट कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आपको आपकी पर्सनालिटी भी वो देख रहे हैं। जो मैंने बोला नहीं, पैनल में एक बंदा होगा जो पूछेगा नहीं कुछ, एक्चुअली वो साइकोलॉजिस्ट है, वो आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स को पढ़ रहा है चुपचाप बैठ के, ऊपर से नीचे तक वो देखेगा आपको, ठीक है। आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो, है ना। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें रियल लाइफ में। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। सो इंटरव्यू हैज वेल डिफाइंड पर्पस एंड स्ट्रक्चर. It has a beginning, middle and end. Each stage is negotiated by the interviewer and the interviewee. Interviews are used for qualitative research, journalism, media reporting, employment, promotion, counseling and so on. इंटरव्यू के बहुत सारे पर्पस होते हैं, कभी क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए होती है, कभी जर्नलिज्म के लिए करते हैं, कभी मीडिया रिपोर्टिंग के लिए होती है, कभी एम्प्लॉयमेंट जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए होता है, देन प्रमोशन के लिए होता है, काउंसलिंग के लिए होता है, ठीक है। देन interviews are conducted to know the person's point of view on a particular problem, issue, subject or topic. And the term is basically associated with employment. जैसे हम इंटरव्यू वर्ड सुनते हैं हमें लगता है कि अच्छा नौकरी की बात हो रही है, इंटरव्यू है किसी का, ठीक है। So the job seekers have to face the interview to get a job. So बहुत टाइप के इंटरव्यू होते हैं, ठीक है। There are several kinds of interviews. The kind depends on the purpose. Basically purpose पे डिपेंड करता है इंटरव्यू का टाइप. They can be formal, semi-formal or informal in nature. Some of the kinds are as follows. ये कुछ kinds है इंटरव्यू के: personal interview, conversational interview, job interview and public interview. Personal interview की सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है। So this kind of interview is conducted to meet personal requirement of the interviewer. तो इसमें basically क्या होता है कि इस इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर होता है ना, जो इंटरव्यू ले रहा है आपका, है ना, उसका अपना कोई पर्सनल रिक्वायरमेंट होता है, वो किसी चीज की इंफॉर्मेशन उसे चाहिए होता है, तो इसलिए जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट करता है, इसलिए वो क्वेश्चंस पूछता है। और बेसिकली पर्सनल इंटरव्यू वो इनफॉर्मल नेचर में होता है, ठीक है, इट इज इनफॉर्मल इन नेचर एंड डज नॉट फॉलो एनी फिक्स फॉर्मेट, क्योंकि इनफॉर्मल इन नेचर में तो इसका कोई ऐसा फिक्स फॉर्मेट नहीं होता है। इसमें तो द इंटरव्यूअर आस्क्स क्वेश्चंस इन इनफॉर्मल मैनर एंड द इंटरव्यूअर आंसर्स देम इन अ फ्रेंडली वे। एज इन इसमें नॉन वर्बल का इतना ज्यादा नहीं रोल रहेगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, क्योंकि ये बहुत ही फ्रेंडली वे में कंडक्ट किया जा रहा है। सो इट इज जस्ट लाइक अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन्स। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, ठीक है। तो एक इंटरव्यू है विलेजर के साथ, ठीक है। सो देयर इज अ गर्ल नेम्ड प्रिया, वो इंटरव्यू कंडक्ट कर रही है किसका, विलेजर का, आउट ऑफ हर ओन पर्सनल इंटरेस्ट, ठीक है। सो प्रिया, she says, "Good morning, uncle. I'm Priya. I have come to a village for the first time. I'm curious to know about the life of villagers. Will you please answer some of my questions to know about village life?" तो यहाँ पे जो लड़की है प्रिया,
उसे वो बेसिकली पहली बार विलेज आई है तो उसे क्या जानना है, विलेजर्स की लाइफ के बारे में जानना है, तो इसलिए वो इंटरव्यू कंडक्ट करी एक विलेजर का। अब जैसे कि यहाँ पे विलेजर बोल रहे हैं क्या, श्योर व्हाई नॉट, बट यहाँ पे वो ये भी आगे बोल सकते थे, जैसे अगर आप लिखोगे, अगर सपोज ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है एग्जाम में, तो आप सबसे पहले लिखोगे गुड मॉर्निंग प्रिया, श्योर व्हाई नॉट, क्योंकि इसने अपना नाम मेंशन कर दिया है ना, तो यू कैन राइट इट, ठीक है, यू कैन ऐड इट। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि डायलॉग राइटिंग में सिर्फ येस नो वन वर्ड आंसर नहीं देना होता, तो ठीक इसी तरह इंटरव्यू में भी येस नो वन वर्ड आंसर नहीं देना होता है, पूरा पूरा सेंटेंस लिखना होता है, ठीक है, प्रिया या बोलना होता है, मेन इंटरव्यू में भी येस नो सिर्फ नहीं चलता है, पूरा सेंटेंस बोलना होता है, ठीक है। प्रिया, the villagers do not have modern facilities like internet, computers, etc. What is the source of your entertainment? Then the villager answers, we don't know about computer, internet or so, but we sit together in the evening time, share jokes and make fun. Then Priya asks, you don't have cemented house, how do you manage? Then villager says, we lead a contented life, we manage very well. Then Priya asks, which crops do you grow in your fields? Then villager says, we grow wheat, pulses, maize and rice, sometimes we grow vegetables. Then Priya asks, how do you know when to water the crop, when to use fertilizers and when to reap the crop? Then villager, this is matter of experience. All of us are engaged in this work for a long time. Even we have learned from our ancestors. Then Priya asks, how do you irrigate your fields? Villager, we draw water from the nearby canal to irrigate our fields. Then Priya, how do you manage with such a meager income? Then villager answers, we have limited requirements. We consume food items that are grown in our fields. We also have income from animal husbandry. We sell milk and get money. Priya, which animals do you rear? Villager, we have cows, buffaloes and goats. We sell their milk and earn money. We also have oxen that are used for farming. Then Priya, thank you uncle, spare your valuable time. The information helped me very much to know about village life. Villager then says, you are welcome. अब आपने यहाँ देखा होगा कि बहुत ही फ्रेंडली वे में ये कन्वर्सेशन हुआ है, ये इंटरव्यू कंडक्ट किया, इसमें बेसिकली जो इंटरव्यूअर थी प्रिया, उसका एक पर्सनल मोटिव था कि वो विलेजर की लाइफ में के बारे में जानना चाहते, कोई ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं था इसमें, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटरव्यू विच इज कॉन्वर्सेशनल इंटरव्यू। ये इंटरव्यू तब होता है जब बेसिकली जो इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई जो होते हैं वो एक दूसरे को पहले से जानते होते हैं। जैसे यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू में ऐसा नहीं था, लेकिन हाँ वहां पर भी ऐसा हो सकता है, बट ये है कि वहां पे एक पर्सनल कोई इंटरेस्ट छुपा होता है, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू इज हेल्ड व्हेन बोथ द इंटरव्यूअर एंड द इंटरव्यूई आर नोन टू ईच अदर। कन्वर्सेशनल टोन जो है, कन्वर्सेशनल जो इंटरव्यू है, ये सेमी फॉर्मल होता है नेचर में। However, more than 2 persons can participate in this kind of interview, but only 2 of them take part in the conversation at one time. अब इसमें 2 से ज्यादा लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे 2 ही लोग कॉन्वर्सेशन में पार्ट लेते हैं। Even the interviewee can ask question from the interviewer, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशनल इंटरव्यू है, तो यहाँ पे जो इंटरव्यूई है, जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है, वो भी रिटर्न में क्वेश्चन पूछ सकता है इंटरव्यूअर से, ठीक है। No predetermined questions are asked in this type of interview. Rather, they are framed according to the situation. और इसमें भी पहले से कोई questions नहीं बनाए जाते हैं, ठीक है। Predetermined questions नहीं होते, उसी टाइम पे on the spot according to the situation questions frame किए जाते हैं और पूछे जाते हैं। और the tone of interview is conversational. ऐसा लगता है कि सही में बातचीत हो रही है, conversational tone होता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे थोड़ा। यहाँ पे एक इंटरव्यू है टीचर के साथ, तो ऑब्वियसली आप टीचर को पहले से जानते हो, ठीक है। बोथ पर्सन आर नोन टू ईच अदर। स्नेहा इज अ गर्ल एंड टीचर ही लिखा हुआ है, कोई नाम नहीं है, ठीक है। गुड मॉर्निंग सर, स्नेहा सेज गुड मॉर्निंग सर, आई हैव बीन असाइन्ड सम प्रोजेक्ट वर्क, आई एम टू इंटरव्यू 5 persons, आई हैव कम टू इंटरव्यू यू। तो टीचर बोलते हैं यू आर वेलकम। तो अब यहाँ पर भी जैसे कि मैंने वहां बताया था आपको उस वाले एग्जाम्पल में, यहाँ पर भी टीचर पहले बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग स्नेहा, यू आर वेलकम, ठीक है। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आती तो आप ये पूरा लिखोगे, ठीक है।
जहां तक करेक्शन है बता रही हूँ वो कर लेंगे. Then Sneha, how many years have you been in this college? Then teacher, I have been in this college for last 10 years. Sneha, how did you come to this profession? Teacher, since my childhood, I was interested in teaching. I always dreamt of becoming a teacher. Moreover, it is a respectable profession. That is why I decided to try my luck on this profession. Sneha, had you to struggle in finding this job? Teacher, yes, I worked as an ad hoc teacher for 5 years before coming to this college. It was a terrible time. There was no surety of job, but I managed anyhow. Sneha, I too want to become a college teacher. What would I have to do to achieve my objective? Then teacher says, first you will have to complete post-graduation with minimum 55% marks. Then you will have to qualify NET exam. Then Sneha, is PhD not required? Then teacher says, no, either PhD or NET is the minimum eligibility criteria condition for becoming a college teacher. Then Sneha asks, what problems do you face in the execution of your duties? The teacher says, problems are part and parcel of life. It depends upon how we take them. That makes the difference. I never take problems as hurdles. Rather, I take them as challenge. I face the problems with courage and try to overcome them. I always try to find the solution and I find it. Sneha, what does motivate you to move ahead? Teacher, strong willpower motivates me to move ahead. I have never been disappointed. Sneha, what are your views about the students? Teacher, today's students are not serious about their career. They are least interested in studies. They aren't disciplined. They have no respect for their teachers. They aren't hardworking. They want maximum out of minimum effort. Sneha, what are your views on present education system? Teacher, I am not satisfied with present education system. The present system is based on theory. There is very less scope for practical knowledge. The education should be combined with lived reality. Then Sneha says, thank you sir for your thought-provoking views. These may be very useful for me as well as other students. Thank you again for sparing time. Teacher, we are here for you. ठीक है, ये था कॉन्वर्जेशनल इंटरव्यू. अगला टाइप का आते हैं जॉब इंटरव्यू. ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइप का इंटरव्यू है और बेसिकली जब हम इंटरव्यू का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में जॉब ही आती है कि हाँ जॉब के लिए इंटरव्यू. ठीक है, सो ये बेसिकली एक जॉब एस्पिरेंट के बीच में और जो एम्प्लॉयर है या उसके कोई रिप्रेजेंटेटिव है उस पर्टिकुलर कंपनी से उनके बीच में होता है. और इसमें बेसिकली क्वेश्चन आंसर सेशन होता है. ठीक है, और ये पूरी तरह से फॉर्मल होता है. ठीक है, और ये दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एम्प्लॉयर के लिए भी और कैंडिडेट के लिए भी, क्योंकि भाई कैंडिडेट को जॉब चाहिए और एम्प्लॉयर को एक कोई कैंडिडेट चाहिए जो उनकी कंपनी के लिए सही हो. ठीक है, सो अ जॉब इंटरव्यू इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन the job aspirant and the prospective employer or its representatives. It is basically a question answer session which involves specific questions and appropriate answers. It is quite formal in nature. It is of vital importance to both the employer as well as the candidate. The candidate wants a suitable job befitting her or his eligibility, and the employer wants a suitable candidate for the position to be filled in. The employer tries to recruit the candidate who will be an asset to the organization and the candidate tries to prove his or her competence to the interview. तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया दोनों को ही जरूरत है. ठीक है, तो एम्प्लॉयर भी ऐसा कैंडिडेट चुनता है जो कि भाई उसकी ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी के लिए बेस्ट हो, एक एसेट हो, लाइबिलिटी ना हो, और कैंडिडेट भी अपनी वर्थ, अपनी कॉम्पिटेंस प्रूव करने की कोशिश करता है इंटरव्यू के थ्रू. So it helps the employer to evaluate the candidate's knowledge, experience, technical skills, competence, confidence level, and communication skills.
It also provides the candidate an opportunity to know about the organization, its policies, expectations from the prospective employee, work culture, job profile, and ascertain whether the position will suit him or her. Then in most cases, a panel of interviewers is formed to evaluate the candidates. जैसा कि मैंने बताया, कभी-कभी पूरा पैनल बनाया जाता है, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है? इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए. So panel is a committee appointed to judge a contest or competition. There can be 2 to 20 members in the panel, but most selection committees normally consist of 3 to 6 members. Each member focuses on a particular aspect of evaluation to ensure effective decision making. One of them studies the behavioral aspects of the interviewees. Usually he or she sits to a side and observes the movements, expressions and behavior of the interviewees. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो इसमें से एक जो है वो आपका सिर्फ एक साइकोलॉजिस्ट होगा जो सिर्फ आपका पर्सनालिटी ट्रेट जज करेगा, आपका बिहेवियर को देखेगा. वो जनरली साइड में बैठता है और सिर्फ आपके वो सारे नॉन वर्बल जो है बिहेवियर देखेगा आपके, ठीक है. Members of the panel ask questions one by one from the candidate and the candidate answers each of them. It gives the members enough scope to study the candidate. This is the most popular form of interview in our country. तो देखते हैं, सबसे पहले है सिचुएशन है. तो यहाँ पे शिखा इज द कैंडिडेट एंड देयर इज अ पैनल ऑफ 5 मेंबर्स A, B, C, D, E. ठीक है, शिखा जो है वो कैंडिडेट है. 5 पैनल में 5 मेंबर्स हैं A, B, C, D, E. सो जैसे कि मैंने डायलॉग राइटिंग में बताया था, अगर आपको याद हो, ठीक है, कोई भी इमोशन, एक्सप्रेशन, मूवमेंट होंगे तो वो ब्रैकेट में आ जाएगा एक लाइव फीलिंग देने के लिए कि सच में ऐसा हो रहा है, ठीक है. तो यहाँ पे भी देखिए, शिखा एंटर्स द रूम, यहाँ पे ब्रैकेट में एंटर्स द रूम आया. गुड मॉर्निंग सर्स, बहुत सारे लोग हैं इसलिए सर्स है. एक रूल और, अगर मान लीजिए रियल लाइफ के लिए भी बता रही हूँ, यहाँ के लिए भी लिखने के लिए भी बता रही हूँ, अगर सपोज पैनल में कोई एक लेडी भी है, ठीक है, तो सबसे पहले लेडी को विश करते हैं, गुड मॉर्निंग मैडम एंड गुड मॉर्निंग सर्स. और बारी बारी सबको नहीं विश करते, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, ऐसे नहीं करते, ठीक है, बस गुड मॉर्निंग सर्स या, ठीक है. और अगर लेडी भी है तो गुड मॉर्निंग मैडम एंड गुड मॉर्निंग सर्स, ऐसे बोलते हुए हर एक की तरफ इस तरह देखना, एक नजर ऐसे घुमानी है, ठीक है. देन इंटरव्यूअर्स, गुड मॉर्निंग. देन ए, प्लीज बी सीटेड. और हाँ, जब तक बोला ना जाए बैठने के लिए तब तक बैठा नहीं जाता, खड़े रहा जाता है. ये मत सोचना कि वो भूल गए हैं, कि बोल ही नहीं रहे हैं भाई बैठना है, भूले नहीं है, वो सब कुछ इंटेंशनली कर रहे हैं. आपका पेशेंस लेवल चेक कर रहे हैं कि आप कैसे क्या करते हैं, आप कितने प्रोफेशनल हैं, ठीक है. देन शिखा सिटिंग ऑन द चेयर, सिटिंग ऑन द चेयर भी ब्रैकेट में होगा क्योंकि ये मूवमेंट है, ठीक है. थैंक यू सर. सी, you are Shikha, please tell us about yourself. Then Shikha answers, I am Shikha Chandelier. I belong to Delhi. I was born and brought up in Delhi. I completed my graduation and post-graduation from Delhi University. Both my mother and father are doctors. I am interested in social work. Teaching is my passion. That is why I have applied for this position. Then she asks, do you have some teaching experience? Shikha says, yes sir, I have taught at DPS for 2 years. C, okay, why did you leave the job? Then Shikha answers, in fact, I got married. I had to move to Rohini. My school was about 45 kilometers away from my house. I couldn't manage the traveling. B, what subjects have you studied at your graduation? Then Shikha answers, sir, I have studied English honors. I have done English honors at graduation. Then I did post-graduation in English. Other than English, I have good knowledge of Hindi. I have also done postgraduate diploma in translation. D, have you done B.Ed? Shikha, no sir, but I am planning to do from IGNOU. A, which level of students did you teach at the DPS? Shikha, sir, I was teaching the students of 9th and 10th standard. B, madam, what are your strengths? Then Shikha answers, I am very much talkative and mix with others within no time. That is the reason I establish a good relation with my students. I understand their problems and teach at their level. Then E, how can we make our students a fluent speaker of English? Then Shikha answers,
We can push them to speak more and more English. C. But some of them belong to rural area and don't have even basic knowledge of English. Then Shikha answers, Sir, we can form groups of the students. They can better learn in peer groups. C. Okay, thank you. Do you have any questions? Shikha, Sir, when will be the result of this interview be declared? C. Just after the interview. Shikha says, Thank you, sir. अब देखिए एक चीज मैं आपको समझा दूं कि इसने जब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है ना, डू यू हैव एनी क्वेश्चन, तो आपको बोलना है नो थैंक यू, आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन. ठीक है. कभी भी एग्जामिनर से, कभी भी इंटरव्यूअर से क्वेश्चन नहीं पूछता है कैंडिडेट, सिंपली नो बोल देंगे. ठीक है. यहाँ पे दिया है, गलत है. ठीक, बिकॉज इससे बेस्ट एग्जाम्पल और कहीं नहीं था, इसलिए मैं नहीं चिपका सकती थी कहीं से उठा के. लेकिन कभी भी इंटरव्यूई जो है वो इंटरव्यू से सवाल नहीं पूछेगा, सिंपली नो बोलेंगे, नो सर थैंक यू, आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन. जितने भी सवाल दिमाग में हो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं पूछना है. ठीक है. टाइप ऑफ इंटरव्यू देखते हैं, पब्लिक इंटरव्यू. इसके भी दो टाइप हैं. ठीक है. सो दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू इज कंडक्टेड फॉर मीडिया रिपोर्टिंग और पब्लिकेशन. तो ये इंटरव्यू बेसिकली मीडिया रिपोर्टिंग या पब्लिकेशन के लिए होता है. कभी कभी आप लाइव टीवी पे चैनल पे दिखाते हैं, न्यूज चैनल पे इंटरव्यू दिखाते हो किसी का, उसके लिए, या पब्लिकेशन में आता है, कभी न्यूज़पेपर पे किसी का इंटरव्यू आ गया, मैगजीन में आ गया, इंटरनेट पे आ गया, पब्लिश हो गया किसी वेबसाइट पे. ठीक है. तो ये उन सारे इंटरव्यूज की बात हो रही है. और पब्लिक इंटरव्यूज को जो है मीडिया इंटरव्यू भी कहा जाता है. इट इज ऑल्सो नोन एज मीडिया इंटरव्यू. The interviewer works directly with the interviewee. He or she prepares a list of questions before the interviewee and asks them from the interviewee one by one. अब जैसे कि इससे पहले वाले इंटरव्यूज में हमने देखा था कि इसमें पहले से क्वेश्चन नहीं प्रिपेयर थे, लेकिन यहाँ पे पब्लिक इंटरव्यू में हम पहले से क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं. ठीक है. फिर चाहे वो पब्लिकेशन के लिए हो या वो मीडिया रिपोर्टिंग के लिए हो, दोनों में क्वेश्चन पहले से प्रिपेयर होते हैं. बस पब्लिकेशन और मीडिया रिपोर्टिंग में ये अंतर होता है कि मीडिया रिपोर्टिंग में अगर आप लाइव दिखा रहे हो इंटरव्यू, तो वहां पे आप एडिटिंग नहीं कर सकते. अगर लाइव नहीं दिखा रहे हो, पहले से रिकॉर्डेड है, प्री रिकॉर्डेड है, तब तो एडिटिंग पॉसिबल है. थोड़ा बहुत आप कट कर सकते हो बीच बीच से वीडियो. ठीक है. लेकिन हाँ, पब्लिकेशन में आप बहुत कुछ एडिट कर सकते हो अपने साइड से. ठीक है. सो जनरली द इंटरव्यू इज कंडक्टेड विद सम फेमस सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्स स्टार, साइंटिस्ट, सब्जेक्ट एक्सपर्ट और सो. The interview can be conducted to get interviewees' views on some topic or issue, make public aware of her or his achievements, lifestyle, or clarify something about. तो public interview basically दो टाइप के होते हैं, interview for media reporting and interview for publication. Interview for media reporting के बारे में बात करते हैं. So this type of interviews can be watched daily on टीवी चैनल्स. दे कैन बी लाइव और रिकॉर्डेड, जैसा कि मैंने आपको बताया, लाइव भी होते हैं, रिकॉर्डेड भी होते हैं. इन लाइव टेलीकास्ट द इंटरव्यूअर एंड द इंटरव्यूई रिमेन प्रेजेंट लाइव ऑन द टेलीविजन. द होस्ट ऑफ द शो डायरेक्टली टॉक्स टू द ऑडियंस एज वेल एज द इंटरव्यूई. सिंस इट इज लाइव, द इंटरव्यूईज वर्ड्स कैन नॉट बी एडिटेड. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि लाइव है तो यहाँ पे एडिट नहीं किया जा सकता, एज इट इज शो करना पड़ता है. बट ये पॉसिबल होता है एडिटिंग रिकॉर्डेड इंटरव्यू में, वहां पे आप ट्रिम कर सकते हैं वीडियो. अब यहाँ पे सिचुएशन देखते हैं. ठीक है. सिचुएशन ये है, इसका एग्जांपल शो कर रहे हैं. सिचुएशन ये है कि यू आर प्रीति, यू होस्ट द शो बॉलीवुड टॉक्स. आप प्रीति हो और आप होस्ट करते हो कौन सा शो? बॉलीवुड टॉक्स. दीपिका पादुकोण इज कमिंग ओवर टू योर शो. दीपिका पादुकोण आती हैं आपके शो पर. यू आर टू इंटरव्यूअर, और आपको उनका इंटरव्यू लेना है. तो इमेजिनिंग योरसेल्फ बोथ द इंटरव्यूअर एंड द इंटरव्यूई, यू राइट द कंटेंट ऑफ द इंटरव्यू. तो यहाँ पे आपको इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई खुद ही बन के कॉन्टेंट लिखना है इंटरव्यू का. तो प्रीति, गुड मॉर्निंग एवरीबडी. एज यू नो, गर्ल्स आर रॉकिंग बॉक्स ऑफिस इन द मॉडर्न टाइम. वी आर प्राउड ऑफ गर्ल पावर. Today we have invited a beautiful personality and an outstanding actress to our show. Please welcome supremely talented and gorgeous Deepika Padukone. Welcome Deepika to my show Bollywood Talks. Deepika, thank you for having me here. It is an honor to be invited to the show. Preeti, at first congratulations Deepika for your marriage. Should I call you Deepika Bhavnani Singh? Deepika says, oh no, please call me Deepika Padukone, wife of Ranveer Singh Padukone. Preeti, all right Deepika. The viewers would love to know about your first meeting with Ranveer Singh. Deepika, actually we first time met at an award function in Singapore. But
You can say that we seriously met at Sanjay Leela Bansali's house when he invited us at lunch to sign the movie Ram Leela. Preeti. Okay, when we talk about Sanjay Leela Bansali, we remember Padmavat. Would you like to play some historical character in the future time? Deepika. Not after this. I don't think I can top Padmavati. So at least for a long time to come. I will not attempt any historical character. Preeti. What is the secret of your fighting spirit? Deepika. I am from a sports background. I do not give up easily. Preeti. You are a stunning actress and superstar. Does the tag make you proud? Deepika. I don't think I am a star. I consider myself like any other girl who is of my age. Other girls may be working in offices or doing other jobs. Similarly, I too have been working. Preeti. Do you feel under pressure while selecting the movies? Then Deepika. Absolutely not. I always follow my instinct. I focus on the story. Preeti. What keeps you so grounded? Deepika. I always believe that success is temporary. So enjoy till it lasts. It is me today. It will be someone else tomorrow. You should enjoy your work. The rest happens on its own. Preeti, you are a busy professional. How do you maintain balance between your house and work? Deepika, there is a strong side to me and it is that of a homemaker. I look forward to spending time at home in the evenings cooking a meal and chatting with my parents and friends. Preeti, what is the secret of your glowing skin? Deepika, I am a big foodie. So much that I eat in every half an hour. This is the secret of my glowing skin. Preeti, thanks Deepika for such a nice chat. ठीक है, so ये था मीडिया रिपोर्टिंग के लिए. फिर आते हैं लास्ट टाइप पे, जो कि है इंटरव्यू फॉर पब्लिकेशन. ये बेसिकली ऑफलाइन पब्लिश होता है. इसमें पूरी तरह से एडिटिंग पॉसिबल है. ठीक है, पहले से इसमें भी क्वेश्चन प्लान होते हैं, प्री प्लान्ड होते हैं. न्यूज़पेपर में, मैगजीन में या ऑनलाइन इंटरनेट पे पब्लिश होता है ये इंटरव्यू. ठीक है, so this kind of interview is mostly held offline. The interviewer meets interviewee, asks questions and writes down the responses. She or he enjoys freedom to edit the responses. And generally this kind of interviews are published in newspaper, magazines or online over the internet. ठीक है, अब यहाँ पे सिचुएशन देखते हैं. ठीक है, सिचुएशन है, you are a press reporter working with a leading newspaper. Read the below information about Sudha Chandran and write the content of an interview with her by imagining you both the interviewer and the interviewee. तो आप एक प्रेस रिपोर्टर है जो कि लीडिंग न्यूज़पेपर के साथ आप काम कर रहे हैं और आपको इंफॉर्मेशन नीचे दी गई है सुधा चंद्रन के बारे में. ठीक है, और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको इंटरव्यू का कंटेंट लिखना है उनके साथ और आपको इमेजिन करना है कि दोनों को, आप इंटरव्यूअर हो और आप इंटरव्यूई हो. ठीक है, उस हिसाब से आपको सेंटेंसेस फ्रेम करना है इंटरव्यू के. ठीक है, सो सुधा चंद्रन, an orthopedically handicapped dancer and actress, has proved to the world that disability is not an obstacle in the way of success. One can climb the ladder of success in spite of being a handicapped. Despite amputation of one leg, she has established herself as a dancer as well as an actress. She was born in a Tamil family on 27 September 1965. She started dancing at the tender age of 3. She was passionate for dancing since her childhood. She even attended dance classes after school and reached home in the evening sometimes after 9. She passed her 10th standard with 80% marks but refused to opt for sciences and decided to continue with arts as her subjects for further studies in the hope that she would be able to spare time for dance practice. By now, she had made several stage performances which had all been widely appreciated. It was just the beginning of the show for her, but the God had some other plans. It was the day of 2nd May 1981, which changed her life completely. On the day, she was traveling to Trichy in a bus
which met with a fatal accident, resulting in the death of some passengers, while many were critically injured. Sudha was one of them who escaped death, but her right leg was badly injured. Since the patients were in a large number, she was attended to by the interns, who neglected the cut on her right ankle and wrapped it up with a bandage, which caused gangrene later. In order to save life, her leg had to be amputated 7.5 inches below the knee. The amputation broke her as it was the death of her dream. She was highly disappointed, but did not lose hope. She met Dr. Sethi, who provided her with the Jaipur food. It was the beginning of a new round of struggle for her. She learned to walk with the help of artificial leg, as well as tried on dancing. However, it was not easy. Her amputated leg would often bleed, and pain became more severe with fast movement of the leg. After each dance session, when saw the blood, she started losing hope. But her determination did not falter. She met Dr. Sethi again. He was highly impressed with her strong willpower. Observing the requirements of dance, he arranged for a new leg. But the problems had not been resolved yet. The bleeding started again, but could not shake her determination. She bore the severe pain, though did not allow her face to reflect her agony. एक मिनट, next page पे clearly दिया हुआ, just a second. Agony, yes. एक मिनट. Just a second, please give me 1 minute. चलो मैं यहीं से start करती हूँ. She kept on practicing and mastered. ये रहा. हाँ. She kept on practicing and mastered all the. Courage, एक मिनट. She kept on practicing. Then यहाँ से हाँ. When mastered all the dance position, she waited for an opportunity to perform once again on stage. Finally, she got the opportunity on 28th January 1984. She was to perform along with another dancer at Mumbai. It was a challenge for her. She overcame the situation with courage and emerged triumphantly. Even she forgot that her leg was artificial and started dancing swiftly. At the end of the performance, the hall echoed with the sound of claps. That day onwards, she did not look back. She had made her mark in the world as a successful Bharatanatyam dancer. She traveled many countries where she made stage performances. In the aftermath of her success, she was welcomed into the film industry. Her debut in the just a second. Just a second, okay. Her debut in the industry was through the Telugu movie. इसको मैं थोड़ा छोटा करती हूँ तो आएगा. Yes, so her debut in the industry was through the Telugu film Mayuri, which was later dubbed into 2 other languages. The film also has Hindi remake by the name Nache Mayuri. Other than films, she has also worked in a number of television serials. She met her husband, assistant director Ravi Dang, on the set of a movie. Both fell in love and got married to each other in 1994 amidst the objection from her parents because Ravi was a Punjabi and she was Tamil. Both have been enjoying a happy married life since then. ठीक है? तो ये थी information. अब देखते हैं इंटरव्यू. ठीक है, ये थी सुधा चंद्रन के बारे में इंफॉर्मेशन. अब आप इंटरव्यू कैसे डिजाइन करते हैं ये देखते हैं, बिकॉज ठीक इसी तरह आपको एग्जाम में भी करने को आएगा है ना, कि आपके पास पैसेज आएगा और उसी के बेसिस पे आपको इंटरव्यू
कंडक्ट इंटरव्यू आपको डिजाइन करना पड़ेगा, सेंटेंसेस फ्रेम करने पड़ेंगे, ठीक है। सो रिपोर्टर, गुड मॉर्निंग मिस चंद्रन, आई एम जतिन सहगल फ्रॉम द हिंदुस्तान टाइम्स. I have come here to interview you. Could you please spare some time for the interview? सुधा, you are welcome. अब यहाँ पर भी ये गुड मॉर्निंग बोल सकती थी, ठीक है, ये आप लिखेंगे, अगर आप लिखेंगे जब इंटरव्यू तो ध्यान रखेंगे इन चीजों का, ठीक है। रिपोर्टर, आई एम टॉकिंग टू एन एक्सीलेंट भरतनाट्यम डांसर. You would have to face several difficulties in your way to achieve this status. Would you please tell about your journey? Sudha, nothing can be achieved without hard work and dedication. Similar is the case with me. I started dancing at the age of 3. I had to do a lot of practice. I attended the school in the morning and went for dance classes in the evening. Only then I could learn a little bit. Then reporter, how did you feel when you came to know that your leg would be amputated? Sudha, it was a horrible dream for me. Dancing was a passion to me since my childhood. When I learned that my leg would be amputated, I was extremely perplexed. Perplexed का मतलब होता है confused, ठीक है, worried. But there was no other option. Hence, I had to accept the reality. Then the reporter says, you had to struggle a lot with your artificial leg. How did you manage the situation? Then Sudha, you are absolutely right. It was a difficult time. The leg started bleeding with fast movement of the leg. After each dance session, when saw the blood, I started losing hope. But my determination never let me down. Reporter, I can understand the condition, but you handled the situation courageously. Sudha, thanks to Dr. Sethi, who helped me that time. He understood the situation and provided me with a new leg to suit my requirements. Reporter, how did you feel when audience appreciated your performance at Mumbai? Were you frightened before the performance? Sudha, yes, it was a challenging task for me. I had fear in my mind whether I would be able to perform well with my artificial leg or not. But when reached on stage, I forgot that I am dancing with my artificial leg. My entire focus was on performance. I was extremely happy when the audience liked my performance. Reporter, you are a celebrity today. How do you feel? How do you feel when people recognize you? Reporter, yes. How do you are a celebrity today. How do you feel when people recognize you? Then Sudha answers, whatever I am today, that is because of my fans. I thank them for their love and affection. Reporter, your parents were not in favor of your marriage with your husband. Did you not try to convince them? Sudha, as you know, my husband is from a Punjabi family and I am a Tamil. My parents felt that our marriage would not be successful because of cultural differences. That is why they were not in favor of marriage. But after marriage, they realized their mistake and supported us. Reporter, what is your message to the persons who fall in some difficult situation or are handicapped? Then Sudha answers, I believe that nobody is perfect in this world. One should not consider oneself inferior. She or he should accept the reality and take the situation as a challenge. He or she should not beg for mercy, rather face the situation courageously. Reporter, thank you, Ms. Chandran. I thank you on behalf of my readers. Your experience and motivation would help them to achieve all intended objectives. Thank you again to spare time from your busy schedule. Then Sudha answers, it's my pleasure. So that was all about your interview. ठीक है, और ये आपका we have successfully completed our Unit 3 and next class से that is परसों से हम Unit 4 करेंगे, ठीक है, वो भी हम टाइमली कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे.